हेलो स्टूडेंट्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं. सो फर्स्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस. So first question says, does your study of the article give you a feeling that man is his own great enemy? क्या आपको आर्टिकल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंसान खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन है? In his 12,000 year long stint on the earth, so far man has caused untold harm to the planet. इंसान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है प्लैनेट के ऊपर, ठीक है, its environment and biodiversity. His activities have led to the depletion of ozone layer. उसकी एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर कम हुई है, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, रिसीडिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रिकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. राइट, फ्लड्स बढ़ गए हैं, ड्रॉट्स बढ़ गए हैं. Thus, man has become his own great enemy. आपने नेचर का ध्यान न रख के अपने आप के लिए ही सबसे बड़ा नुकसान किया है. Question number 2. It was nothing so short of a revelation. Everything does indeed connect. What revelation is Doshi talking about? कौन से revelation के बारे में author यहाँ पे बात कर रहे हैं? The scene of Carburetor seals stretching and sunning on ice floes where Doshi and her school students landed on the Antarctica. ये एक was a revelation for her. ये अपने आप में एक revelation था जब वो वहाँ पे जो ऑथर है वो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पहुंची थी. Human beings and seals were as close to each other as stray dogs are close to us in our towns and villages. तो seals हमारे से बहुत ज्यादा close है. जैसे normal towns में dogs आपको इधर उधर घूमते मिल जाएंगे and we don't even pay attention to them. इसी तरीके से उतने ही close हमारे seals भी थी. Right, now this revealed that human existence and the survival of all other species is interrelated and interdependent. यही शो करता है कि इंटररिलेटेड है हम सबका सर्वाइवल और इंटरडिपेंडेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Doshi comments in the end, what a difference a day makes. उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि एक दिन के अंदर कितना डिफरेंस बन जाता है. How do you justify this? Now, Tishani Doshi was satisfied after her expedition to Antarctica. बहुत ज़्यादा satisfied थी with a bunch of teenagers. After spending 2 weeks with them, she was hopeful that the desired change might take many years. जो change आना है वो तो बहुत साल ले लेगा. But the change in the attitude to get this done had come in one day itself. लेकिन वो जो एक change लाने के लिए attitude की जरूरत है कि हमें ऐसा करना है और हम कर पाएंगे, उस attitude को लाने के लिए आज वो काम हो गया है. वो attitude at least आ गया है. change आने में time लगे but वो attitude शुरू हो गया है. This day of realization certainly justifies the comment that even one day makes a difference. और इसीलिए वो एक दिन का difference भी बहुत है, इसीलिए दिशानी ने ये बात कही थी. Antarctica is unlike any other place on earth. Justify the statement. So Antarctica is frozen and desolate. Its inhabitable terrain saves it from the damaging impact of human activities like construction, urbanization, and industrialization. So much of the civilization's past lies undisturbed in its embedded layers, making it unlike any other place on earth. Okay, let's come on to the long question answers. Take care of the small things and big things will take care of themselves. छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी. So Antarctica has a very simple ecosystem that lacks variety. वहाँ पे variety नहीं है लेकिन बहुत ही simple ecosystem है. However, if this system is interfered with and environmental changes are affected indiscriminately, it can recoil and is likely to deplete ozone layer, which protects us from the injurious sun rays. Now, this will adversely affect the phytoplanktons. जो phytoplanktons क्या है, जो tiny forms of animal और plant life है, उनको बहुत ज़्यादा वो affect करेगा, which act as a fodder. उनके लिए तो वो खाना है for the marine life. Marine life किसको कहते हैं? जो पानी के अंदर plants और animals होते हैं, उनके लिए it acts as a fodder. खाना, you know, एनर्जी आती है उनको. Hence the entire flora and fauna. Flora and fauna means जो plants हैं और जो animals हैं.
ठीक है, वहां पे दे विल बी जियोपार्डाइज एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल विल बी ऑल्टर्ड। सो जो कार्बन साइकिल है वो भी वहां पे थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगी। सो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मैन टू पे स्पेशल अटेंशन, इसलिए ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ध्यान दीजिए टू टाइनी फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। अगर हम इन छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ को ध्यान देंगे, so taking care of smaller things will affect bigger things in a positive way। इनका हम ध्यान रखेंगे तो बाकी बड़ी चीजों का ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। The depletion of ozone layer will be prevented and carbon dioxide emissions will be reduced। Thus, the parable क्या कहा गया है? Look after the small things in life, the big things will automatically get looked after is really appropriate। Okay, the next question. The author of Journey to the End of the Earth is Tishani Doshi, who is now a famous poet and dancer. As the narrator, write a speech discussing the impact of the Students on Ice program on your life and writing। अब आपको तिशानी बन के ही ये एक लिखना है लेटर जिसमें इस प्रोग्राम का क्या इफेक्ट हुआ ऑन योर लाइफ और आपकी जो राइटिंग्स हैं उसके ऊपर वो आपको शेयर करना है। So members of August audience, I did not simply take to writing. Many experiences of life forced me to pick up the pen and reflect upon the priceless lessons I had learned during my marvelous journeys to different parts of the world। मैंने ऐसे ही पेन नहीं उठा लिया बल्कि different parts of world में मैंने इतना घूमी हूँ, इतने experiences किए हैं। So I wanted to share those experiences with people। For example, my journey to the enigmatic Antarctica under the Students on Ice program was instrumental in building my writing career। The vast expense, यानी कि कितना बड़ा था वो area of this giant ping pong ball filled me with awe। पिंग पोंग बॉल किसको कहा जा रहा है? अर्थ को कहा जा रहा है। उसका जो ये वास्ट एक्सपेंस था, वास्ट एरिया था, उसने मुझे इन ऑ मीन्स सरप्राइज में छोड़ दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम I registered relief to see the white landscape। white landscape को देख के मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा था। and uninterrupted blue horizon, right? इस मतलब कुछ ना छेड़खानी करने वाला blue horizon। The profound wonder that I felt at the immensity of this land stayed with me forever। I felt inspired to share my experiences with others through writing not only my factual observations but also the creative strengths triggered by this beautiful landscape। My visit to Antarctica changed my life for good। It gave me the mission to save environment and spread awareness in every possible way। My poetry and dance fulfill this purpose of entertainment with information। If I had not been to Antarctica, I might have not become a creative artist। So last में thank you। Did you notice कि आपने ये जो लिखा है लेटर पूरा पैराग्राफ्स में लिखा है? एटलीस्ट मेक 3 पैराग्राफ्स और लास्ट और फर्स्ट में सैल्यूटेशंस लिखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने अपना ऑथर का एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How can a visit to Antarctica be an enlightening experience? Elaborate। A visit to Antarctica can be an enlightening experience as it brings the visitor in close contact with a pristine land, relatively safer than the other lands which are a victim of destruction। क्योंकि ये एक pristine land था, यानी कि साफ सुथरा, क्योंकि बाकी जो lands हैं वो तो हमने खराब कर दिए हैं, डिस्ट्रक्ट कर दिए हैं पूरा। ठीक है, this visit can help one to understand the Earth's past, present, and future। It can teach the future generations to understand the worth of our planet Earth, कि कितना important है Earth हमारे लिए। Antarctica holds within its ice layer 500,000-year-old carbon records which can help mankind to study climatic changes caused by the global warming। Again, it makes the visitor understand the beauty of balance। Now, this knowledge can help preserve the earth in a better way and for a longer duration। The effect of melting glaciers, इसमें आपको बेसिकली सारे जो भी एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको जज करना है, उनको लिखना है यहाँ पे। तो अब जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है,
कोलैप्सिंग आइस शेल्स have been seen here, वो वहां पे दिख रही हैं. A visit to Antarctica can be very useful as its simple ecosystem and lack of biodiversity make it the right place to study the effect of all the environmental changes. If global warming makes Antarctica hotter, it will have disastrous consequences elsewhere. अगर वहां गर्मी हुई, वहां ऑलरेडी जितने भी आपके आइस शेल्स हैं ये ऑलरेडी ब्लॉक हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ पे और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो सब तरफ ऑल ओवर द अर्थ देखने को मिलेंगे. Right, so this was an important chapter for you. Please do learn, learn the right words that I have used in the chapter in the question answers, and just start practicing. ये नहीं कि सिर्फ learn करके छोड़ दिया. Make yourself write 1 or 2 questions and then judge yourself कि क्या सही learn हुआ है, क्योंकि read करने से लगता है कि learn हो गया है. ठीक है? Okay, thank you.